Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to our special show, Daily Calls, where we try and solve your problems related to the trading positions that you have, and of course, suggest quality stocks which can be a part of your portfolio. Our guest who will solve all your queries today is Mr. Avinash Gorakshakar, Head of Research at Profit Mart Securities. Namaste, Avinash ji. A very warm welcome to you, sir. And festive greetings on Navami and of course Ashtami as well. Different parts of the country are celebrating both festivals simultaneously. The markets are a bit quiet for all through this Navratra. How do you see sentiment on the Lal Street? Yeah, I think good afternoon, Shell. From my side also, I think to your team and you, festive greetings. First of all, I think the markets are experiencing a heavy sell-off from FI selling, I think, which has been seen for the last few weeks. And I think that has been the key trigger. Chinese markets have also been attracting a lot of money because valuations have become a little attractive there. But I think broadly, I have been reading the SIP number. I think the SIP number has crossed 24,000 crores, which is a very big positive development. So I think liquidity in the market continues to be strong. And most importantly, I think Q2 numbers are going to come in now very soon. Already we have seen numbers from TCS. So my sense is that, now the markets will be more stock specific rather than index specific. So I think there's nothing to worry. These are normal corrections. These are not kind of panic sell-offs. And I think investors should realize that, markets had run up also very fast. So I think some corrective action was expected. So I think we have been advising our investors to actually chip into quality stocks wherever valuations have become attractive, wherever there's been some, large amount of selling, which is not related to the fundamentals of these companies. So I think it's a buy on decline market, and I would still believe that earnings growth this year for corporates would be definitely be strong. I think the RBI policy this time has been neutral, but my sense is in the next policy we could get some possibly a positive kind of signal from the RBI governor on interest rates getting cut, and that also could be a big sentimental booster. So I think net, I think we need to stay invested. That's the most important thing, Shailendra. We don't need to be panicky. I think markets would go up and down, but as long as the corporate performances continue to be good, I think we definitely would continue to say that stay invested and get invested into quality companies, because growth is definitely going to continue. There's no doubt about it. Absolutely, Avinash, and it's the wisdom in your opening comments that sort of looks at sensible investing at a time when volatility in the market is increasing. Let's drill down to the most important event, which is the earnings of Tata Consultancy Services. Although the stock is a bit muted today, how do you react to the kind of margin compression and the less than, how should I say, forecast business growth that the company has come up with? Is this a good entry level for TCS at the present moment, or would you rather wait? I think, Shell, my guess is that these numbers from TCS were on expected lines. I think even as of now, the real trigger for most of the IT companies would come possibly after the presidential elections in US are complete. That is post November. I think till that time, maybe the next 1 or 2 quarters could be little tepid. If somebody has a little bit of cash position, I think one can definitely start buying into IT companies like TCS, Infosys, HCL Tech. But I think you need to keep a slightly longer term time frame horizon, because IT is not going to completely run out of business. Indian IT companies are well positioned, and once the US presidential elections are over, my sense is that there could be a very strong run rate for fresh orders which are going to be announced. So I think it's a wait and watch, for most of the Indian companies as of now. But we have been telling our clients to buy into, large cap IT companies, provided they have a 12 to 15 month kind of time horizon. Because once the clouds of uncertainty are over, you will probably see a lot of excitement for IT companies. In fact, the domestic business, related to AI as well as other infrastructure related kind of requirements is growing. But the US market is expected to pick up only over the next 3 to 6 months. Right. Avinash, we have viewers writing in, and this is Mr. Sam from Mangalore.
He says that he's purchased Tata Motors at 972 and the price for now is 930, 935. What do you think is the future of Tata Motors? Should he wait for 980 or perhaps better prices to come back? So I think, see, as far as Tata Motors is concerned, I think there was a slight disappointing number which came out on the JLR volume number of late, and that was the reason the stock corrected. But if you see the structure of the business shell, I think as all of us know that this business is going to be now demerged into two entities. One is the pure JLR business, and second is the domestic passenger car business. So my sense is that investors should definitely hold on here. They should not panic because 1 month performance underperformance is not going to actually spoil the entire show. The next couple of months are going to be very we have been hearing a lot of car companies, lot of companies are offering discounts, and this typically happens during the October to December kind of period. But overall, next year is going to be pretty solid. Our sense is that both the commercial vehicles and the passenger car business, as well as the international, JLR business is going to be well positioned over the next 1 to 2 years. So I think if you can hold on for the next 12 to 15 months, I think one should not panic. Please hold on. You will definitely get a decent risk reward at a later point of time. Okay, fair point. Let's shift to YouTube, where a lot of our viewers have started to write in. We have a gentleman sending you a query on HDFC Bank. This is Mr. Abhishek Kumar. He's purchased 30 shares of HDFC Bank at current price. He wants to know what could be a medium term outlook on HDFC Bank, and for how long should he hold this private lender in his portfolio? Yeah, as far as HDFC Bank is concerned, a very near-term value trigger shell is the value unlocking of HDB Financial Services. I think, as everyone is aware, this is an issue which was expected for a very long time. So I think probably the stock could get little bit of a sentimental booster once this IPO is finalized, because HDB Financial Services is a very large component of HDFC Bank. So that is point number one. Secondly, as far as the banking sector is concerned, we have been hearing that deposit growth have slowed down, cost of deposits have gone up. But I think if you look at the structure of HDFC Bank now post merger with HDFC, my sense is that unless the investor has got at least a 12 to 18 month time frame horizon, one cannot expect a very sharp increase in the price. First of all, the balance sheet size has increased significantly. Secondly, the macro environment has become more competitive. We are seeing that a lot of money is going from fixed deposits, term deposits to mutual funds. So I think there's been a very strong kind of flavor for Indian equities, specifically for SIPs. So I think unless the investor has a 12 to 18 month horizon, I think one cannot expect a very decent risk reward. But yes, longer term prospects are good. This is one of the most well managed private sector banks. But I think you need to give in a little more time, especially if you want to get a decent risk reward. Absolutely, that's very well explained. Avinash, there is Mr. Avnish Chaudhary who wants to know about IREDA. The company, of course, announced its second quarter earnings just now, and the numbers have been fantastic. Avnish has purchased 2,000 shares of IREDA at 280 rupees. He wants to know what is the outlook on the stock given the fact that earnings have been good in the quarter just gone by. So I think my sense is the investor has purchased the share at a slightly higher level, but he need not worry if he got at least a year and a half kind of time frame in mind, because IREDA is one of the largest financing agencies for renewable energy, and I think the growth momentum which the company has shown clearly indicates that there's a lot of runway and a lot of growth expected going forward. So my sense is that despite the fact that he's now negative on his purchase price, if he can give in a time frame of say 12 to 15 months, I think numbers are going to get better and better as the quarters go by, and the market should obviously get this stock re-rated. In fact, there have been some news reports, Shell, that the company is going to make a preferential offer or a QIB to large institutional investors. Then that point of time, the stock could further get re-rated. So I think it's better to hold rather than booking a loss. Keep a time frame of at least 12 to 15 months. I think he should get a decent risk.
Okay, fair point. There is this 5,000 crore rupee QIP. Avinash, the management was just with us 10 minutes ago, and they're using this fundraise to sort of expand into the retail side of renewable lending. Let us see what the next 2-3 quarters come up. But this is definitely not the time to sort of exit IREDA. Just please continue holding. I'll request the PCR to fire the chart of MOS Chip. Avinash, Mr. Vinod Chaudhary writes about MOS Chip from Hyderabad, and he wants to know that what could be a good entry level for him in MOS Chip if he wants to hold for 2-3 years. I think, see, MOS Chip, according to me, Shailesh, is one of those few companies which is into the semiconductor basket. And I think that is something which has excited a lot of investors. The stock has gone up quite significantly. So I think my guess is that, if we can do an SIP gradually on any market decline, I think that would be a good strategy rather than buying, the entire investment quantity at one shot. Because these are companies, which are going to be uniquely positioned now going forward. I think, probably, rather than putting the entry price, I would say that even at the current level or maybe on slight market declines, start a small SIP. And I think that would help him to actually average his cost better. Because now valuations may look little expensive, but over the longer term, say over the next, say 2 to 3 years, once the semiconductor basket, business grows significantly, it's got a decent kind of head start, which would actually help them record better profitability numbers. So I think that is a big positive for MOS Chip. ओके, करण नाथ मिश्रा जी लिख रहे हैं त्रिचूर केरल से। अविनाश जी, मिश्रा साहब ने 500 शेयर खरीदे हैं रिलायंस पावर के 50 रुपये प्रति शेयर, तो 25,000 रुपये जो उन्होंने लगाए हैं वो इस वक्त एक नुकसान में चल रहे हैं 44 रुपये 50 पैसे। वो जानना चाहते हैं कि 50 का रेट क्या वापस आएगा या नहीं। देखिए, पहली बात तो शेल रिलायंस पावर एक ऐसी कंपनी है जो बहुत चर्चे में है, क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है कि पूरी तरह से कर्जे रिकते हो गए हैं, कंपनी वापस प्रॉफिटेबल ट्रैक पे आ चुकी है। ये एक स्पेकुलेटिव स्टॉक है और मुझे लगता है कि देखिए अनिल अंबानी की सारी जो कंपनियां हैं वहां पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि अभी नुकसान बुक मत करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए 6-12 महीने। पावर सेक्टर में अभी भी फ्लेवर अच्छा है। रिलायंस पावर का भी जो प्लांट है वो अभी पीक लोड के ऊपर काम कर रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा प्राइस में बढ़त मिलती है तो इसको निकल जाइए, दूसरे पावर स्टॉक्स में पैसा लगाने की कोशिश करिए, जैसे कि आरईसी है, उसके बाद टाटा पावर है, टोरेंट पावर है। ये काफी अच्छे विकल्प है कंपेयर टू रिलायंस पावर। जी, और मिश्रा जी अगर आप सुन रहे हैं तो अगर 4-5-6 सर्किट लगे हुए हैं उसके बाद आप खरीदारी करते हैं तो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दें। स्टॉक को तब खरीदना चाहिए जब वो 200 और 100 डीएमए के बीच में चल रहा हो। अगर आप मोमेंटम चेस कर रहे हैं और वो भी 5-6 सर्किट के बाद, तो फिर जो आप खामियाजा भुगत रहे हैं आप जानते ही हैं कि आपको कैसा लग रहा होगा। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन ऑन द पावर सेक्टर। अविनाश, अवधेश ठाकुर वांट्स टू नो about JP Power. He's purchased 2,000 shares at 23 rupees and has a holding period for 5 years. He's asking what should be done. No, I think, see, in JP Power also, I think the biggest challenge is, what is the consistency and what is the reliability of the management in delivering these numbers. If you see the past history of JP Power, I think one thing is very clear that they have miserably, underperformed. And I think the debt on the books has also been quite significant. So I think, rather than taking a 5-year view, I think it's always better to take a 6 to 12-month view. Recent reports suggest that the company has become profitable, but one should also make in mind that these are companies, which are on the borderline case. So one cannot take a 5-year view on a blanket basis. So I think continue to hold for the next 6 to 12 months and evaluate the performance. We are also positive on it for the longer term. But yes, in these kind of companies where the management track record is not all that great, Shell, it's always better to always monitor these on a quarter to quarter basis. So the advice now is hold on, but I think you'll have to give in a slightly longer time frame to see a decent risk reward coming in here. Okay, Sandeep Thakur
writes in from Deoghar, Jharkhand, Avinash, and he has purchased 200 shares of Schneider Electric Infrastructure at 840 rupees. He wants to know if you can give him a 3-month view on this counter. I think, see, my guess is in the very short term, it's very difficult to give a view, but over the longer term, I think this company has a very strong and a bright future. The company's order book is also very encouraging. And most importantly, with so many smart cities announced by the government, a lot of infrastructure spending announced by the government, this is one company which is going to benefit from these initiatives. So I think, at least take a 6 to 12 month horizon and try to stay invested here. 3 months is like a very short technical view, which I think, I may not be the right person to give. But at least from a 6 to 12 month horizon, I think the stock can be hold on. Absolutely, that's wonderfully put. And this is one of those German MNCs which just might turn out to be better return givers if you hold for a period of 1 year or more. Anup Yadav writes in for IRCON International, अविनाश जी 500 शेयर एट 206, वो जानना चाहते हैं कि बजट 2025 तक या 2 साल के अंतराल में इरकॉन का लक्ष्य क्या हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, इरकॉन एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली रेलवे और इंफ्रा में बहुत अच्छा काम कर रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है तो यहाँ से कम 40-50% का अपसाइड पॉसिबल है, बट यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन की जरूरत है, क्योंकि देखिए इस कंपनी ने बोनस अनाउंस करने के बाद स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है। अभी अर्निंग्स ग्रोथ आने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। FY25 स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट, तो आई वुड से दैट अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो यहाँ से जरूर इन्वेस्टेड रहे, अच्छी खासी कमाई होगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लंबा रखना जरूरी है। ओके, सवालों का सिलसिला बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको चलता हुआ दिख रहा है। अदानी पावर, जैसा कि मैं कह रहा था अविनाश जी, अदानी पावर पर पावर स्टॉक्स पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं और आपने राय व्यक्त करी कुछ समय पहले जेपी पावर पर, उससे पहले कुछ और काउंटर्स पर भी। अदानी पावर पर क्या सोच रखते हैं अविनाश जी? क्या लगता है, क्या ये एक अच्छा लेवल है एंटर करने का? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से जिस प्रकार से अभी अडानी पावर ने परफॉर्मेंस दिखाया है, नंबर्स भी पॉजिटिव हो चुके हैं, इनकी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी भी बढ़ने वाली है। मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम पावर सेक्टर में अडानी पावर को स्पेसिफिकली लगे तो मैं 1.5-2 साल का व्यू लेके काफी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि ग्रुप एग्रेसिव है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अभी बिजनेस बिल्टअप किया है, मेरे ख्याल से आगे पावर जनरेशन बढ़ाने की भी बातें ये लोग कर रहे हैं। तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके यहाँ पे निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि अडानी पावर का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छा लग रहा है। ओके, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ये एक बहुत ही अच्छी जानी पहचानी NBFC है अविनाश जी, और लगभग आपके सामने 1076 पर चलती हुई 16 मई 2023 के न्यूनतम लेवल पर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पर आप राय दीजिए। यहाँ पर अविनाश जी मैं आपको सवाल पूछ के बताता हूँ। हाँ, मोहित यादव साहब ने पूछा है कि क्या इस लेवल पर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में एंट्री ली जाए, और उनका होल्डिंग पीरियड 5 साल है। अविनाश जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल। काउंटर लगभग 1700 रुपये से करेक्ट कर अब 1011 पर है। क्या राय रखते हैं आप? बिल्कुल शैलेंद्र, मुझे लगता है कि देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी स्टॉक है माइक्रो फाइनेंस के स्पेस में, और जिस प्रकार का नंबर और जिस प्रकार का ज्योग्राफिकल रीच इनका है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन मौका है अगर आपको 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम करना है। मार्केट आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं देगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक प्रॉब्ली खराब मार्केट सेंटिमेंट के कारण थोड़ा बहुत पिटा हुआ है, लेकिन फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस वापस जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है और इंडिया में जिस प्रकार की इसकी पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि 1050-1075 के रेंज में ये बाइंग शुरू कर सकते हैं।
नजरिया 1.5-2 साल का रखिए, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, चलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्राइस चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब, देखते हैं क्या प्राइस चल रहा है। यहाँ पर जो पहले प्राइस था वो लगभग 71-72 रुपये था, 200 डीएमए के नीचे चलता हुआ। अविनाश जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ब्रजेंद्र कुमार शिवहरे जबलपुर से जानना चाहते हैं कि इस वक्त आपकी क्या राय है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 71 रुपए के आसपास। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये भी एक बहुत ही वेल मैनेज्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो ज्यादातर एमएसएमई और एसएमई सेक्टर को केटर करती है। अभी आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी का मर्जर होना है, थोड़ा सा बुक वैल्यू में इनके लिए इजाफा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक बात समझनी है कि स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अभी पिछले क्वार्टर इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर था, लेकिन जिस प्रकार का कासा इनका है 50%, जिस प्रकार का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 4% के ऊपर, और जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी इन्होंने मेंटेन की, और जो ग्रोथ हमको एमएसएमई और एसएमई सेक्टर में दिख रहा है, मेरे ख्याल से अगले 12 से 18 महीने का व्यू रखिए और इसमें निवेशित रहिए। थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक जरूर है, लेकिन फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि ये बैंक आपको अच्छी खासी कमाई अगले 1.5-2 साल में जरूर देगी। जी, प्रियदर्शनी राउत लिख रही हैं उड़ीसा से, बहुत ही कम इनका होल्डिंग पीरियड है। प्रियदर्शनी जी, एक महीने के लिए आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस पर आपको क्या राय दी जाए? ऐसे में आप अपना ही समय व्यर्थ करती हैं खरीदारी करके। फिर भी मैं अविनाश जी से पूछता हूँ, अविनाश जी आप कुछ राय रखेंगे टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक पर एक महीने के लिए? देखिए मुझे लगता है कि ये ट्रेडर है, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि नंबर्स तो आईसीआईसीआई बैंक के सेकंड क्वार्टर के काफी अच्छे आएंगे। इनकी सारी सब्सिडरीज, अगर आप इंश्योरेंस देखें, ब्रोकिंग देखें, एसेट मैनेजमेंट कंपनी देखें, तो सारी कंपनीज आर डूइंग वेल, इवन द कोर बिजनेस इज डूइंग वेल। तो आई थिंक रादर देन गिविंग अ 1 मंथ व्यू विच इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट, आई वुड से कम 3 से 6 महीने का व्यू काम रखिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बहुत समय के बाद अभी थोड़ा सा ट्रैक्शन वापस दिख रहा है। प्लस टेक्निकली एक जो डेवलपमेंट हो चुकी है कि नवंबर 20 से जो वीकली बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है बैंक निफ्टी के, वो कैंसिल किए जाएंगे, तो इसका भी एक टेक्निकल इफेक्ट आपको शेयर के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक 3 to 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम, और तभी आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। मंथ के ऊपर से तो आप प्योरली मोमेंटम खेलना चाहते हो, तो मोमेंटम खेलने के लिए तो मेरे ख्याल से आपको फंडामेंटल व्यू की जरूरत नहीं है, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपना काम करना है। ओके, ये राय आती हुई दिख रही है आपकी टीसीएस और आईसीआईसीआई की। प्रियदर्शनी जी, अगर आप एक महीने के लिए इस तरीके के काउंटर ले रही हैं तो दो ही जने पैसे बनाएंगे, एक आपका ब्रोकर और दूसरा सरकार आप पर अनेक तरीके के ब्रोकरेज फ़ी, एसटीटी वगैरह लगा के इतने कम टाइम फ्रेम के लिए शेयर नहीं खरीदते। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि पैसा आपका, नफ़ा और नुकसान भी आपका। यहाँ पर हमारे पास सवाल आ रहा है जयपुर से, BLSE सर्विसेज के 500 शेयर अंकुर मोदी ने खरीदे हैं 241 रुपये पर। देखते हैं क्या प्राइस चल रहा है BLSE का। चलिए 222 के आसपास ये काउंटर। क्या कीजिएगा अविनाश जी, ये तो IPO आया था और बहुत ही मायूसी हाथ लगी है लोगों के। क्या लगता है आपको 222 रुपये पर BLSE सर्विसेज, आप इसे ट्रैक करते हैं? बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, ये BLSE सर्विसेज जो है, ये BLS इंटरनेशनल जो वीसा प्रोसेसिंग कंपनी है, इसकी सब्सिडरी है। और मुझे लगता है कि देखिए पब्लिक इशू जब आया था तभी काफी अच्छी तरह से स्टॉक लिस्ट भी हो चुका था। ये कंपनी ज्यादातर ई गवर्नेंस का काम करती है, काफी अच्छे ऑर्डर्स भी इनके पास है। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले, लेकिन पेरेंट काफी स्ट्रांग है, इनका गवर्नमेंट बिजनेस काफी अच्छा है। और मुझे लगता है कि अगर नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने ये रखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड आपको मिलेगा। मेरा कॉन्फिडेंस इस बात पे है कि ये जो पेरेंट है BLS इंटरनेशनल, इन्होंने काफी अच्छी तरह से वेल्थ क्रिएशन अपने प्राइमरी शेयर होल्डर्स को दिया है। तो ये भी कंपनी इनकी ग्रुप कंपनी है जो सब्सिडरी है, तो डेफिनेटली आगे चल के अच्छा पैसा बनेगा, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। ये बिजनेस गवर्नमेंट ओरिएंटेड है,
तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा वोलेटिलिटी जरूर आपको देखने को मिल सकती जी। कमलेश नारखड़े लिखते हैं, जानना चाहते हैं हैवेल्स और ग्रेविटा के बारे में आपकी लंबी अवधि में क्या राय है। अविनाश जी, इन दो काउंटर्स पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, हैवेल्स में मुझे लगता है कि बहुत ही काफी वेल पोजिशन्ड स्टॉक है। आई थिंक कंपनी का बिजनेस मॉडल वेल एस्टेब्लिश्ड है। सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो देखिए हैवेल्स में लिवरेज बिल्कुल नहीं है। तो ज्यादातर जो भी ऑपरेशंस है वर्किंग कैपिटल का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो अपने खुद के कैश फ्लो से फंड करते हैं। और जिस प्रकार से अभी अच्छा मानसून हो चुका है, इलेक्ट्रिकल जो बिजनेस है इनका, ये काफी अच्छी तरह से चलेगा। एयर कंडीशनिंग का भी बिजनेस इन्होंने जो पहले लिया था वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि ये सारे वेल नोन स्टॉक्स है जहाँ पे अल्फा क्रिएशन तो नहीं, बट कम से कम 15-20% साल भर का नजरिया अगर आप रखते हो तो 15-20% की अपसाइड आपको हेवल्स इंडिया के स्टॉक में जरूर मिल सकती है। और शैलेंद्र, दूसरा कौन सा स्टॉक था? Which was the other stock, शैलेंद्र? ग्रेविटा इंडिया। देखिए, ग्रेविटा इंडिया एक रिसाइकलिंग वाला बिजनेस है और काफी अच्छी तरह से इन्होंने बिजनेस को स्केल अप किया है। बट करंट प्राइस पे मुझे लगता है कि जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी करने का समय ये नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, स्टॉक निचले लेवल से बहुत चल चुका है और अभी मेरे ख्याल से इस लेवल पे वैल्यूएशंस आर फेयर टू एक्सपेंसिव। तो आई थिंक जिनके पास है वो होल्ड करें, बट मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी बढ़त एटलीस्ट इन द वेरी नियर टर्म पॉसिबल लग रही है। थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट करेगा और नजरिया अगर आपका 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे एक बड़ी लंबी पोजीशन आप ले सकते हो, बट वो भी ऑन मार्केट डिक्लाइन, नॉट एट द करंट प्राइस। ओके। अविनाश जी, एक आईपीओ अभी फिलहाल आया था पीएन गाडगिल का, ज्वेलर कंपनी है और यहाँ पर चंद्र सिंह जी हैं नई दिल्ली से, उनके पास 434 शेयर का अलॉटमेंट है। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या पीएन गाडगिल को लंबी अवधि के लिए रखें या क्या किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पीएन गाडगिल एक वेल एस्टैब्लिश्ड ज्वेलरी प्लेयर है जो महाराष्ट्र में काम करता है। महाराष्ट्र में इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है। मेरे ख्याल से देखिए अभी स्टॉक लिस्ट हो चुका है, थोड़ा सा समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन अगर नजरिया आपका कम से कम साल 1.5 साल का है तो ज्वेलरी कंपनीज में हमने देखा है कि बहुत ही तेजी से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ब्रांडिंग कंपनीज जो ब्रांड अच्छा चलाती है वहां पे खपत काफी ज्यादा हो रही है। तो और इस बार तो आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर से दिसंबर अभी फेस्टिव मंथ शुरू हो चुके हैं। तो ये जो तीसरा क्वार्टर रहेगा कंपनी के लिए वो बहुत ही बेहतरीन आने की उम्मीद है, क्योंकि इसी समय पे ज्यादातर सोना चांदी और ज्वेलरी के सेल्स काफी ज्यादा बढ़े। तो मैं यही कहूंगा कि आपको अच्छा है कि आपको अच्छा अलॉटमेंट यहाँ पे मिला है, यहाँ पे निवेशित रहिए। कम से कम 12 to 15 मंथ्स का नजरिया लेके यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। जी अविनाश जी, बहुत बहुत आभार आपका, इतने अच्छे, इतने सटीक और इतनी जल्द आपने जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नवमी की और आने वाले दशहरा की प्रॉफिट मार्ट पर आपको, आपके परिवारजनों को और सारे कस्टमर्स को बहुत बहुत बधाई। With that, ladies and gentlemen, the show comes to an end. I'll be back at 2:30 again for the last 1 hour of trade. The Nifty down 36 points, Bank Nifty down 365 points, but a green tick on the IT index. Remain glued to Business Day Television. There's a lot happening on the other side of the break. Now is the right time for us to take a step forward and become a home brand, a more trusted brand in India. Hyundai Motor India is gearing up for the country's largest public issue ever. The South Korean auto company is all set to raise more than 27,800 crore rupees in its first public issue outside of its home market. The offer for sale issue will eclipse the two biggest issues